Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So it's chapter 3 that we're going to start. And firstly, I just wanted to start with अगर किसी को alphabets में interest है, so one can read the A is for Ox short history of alphabets, how alphabet originated, you know, what's its link with Phoenicians and Greeks, alpha and beta did it made the alphabet. And another was The Secret Architecture of Our Nation's Capital book. Okay. So like always, be mindful and have an open heart, ear, eyes, mind. And let's open our mind to new perspective. And let's not forget that transference of knowledge into action, ilm se amal. And the humble request, it's based on books and online resources done in good faith, so might contain a margin of error. So take the good and leave the bad. So starting with this, last time the whole chapter 2 was about healing. So healing and उसमें ज़्यादा melodies आ रही थी. So from this video, you can also understand from this, the Sheikh says, basically जितना भी हमारा current music है, let's take 2023, what's going on with this जब भी हम music या melody सुनते हैं versus Quran या namaz या Arabi, we know the good and bad stuff. So actually what's happening is you know, आपका heart agitate करता है, आपकी frequency lower होती है, आपकी energy definitely, because energy, frequency, these are all linked, वो lower होती है. So basically, you know, everything is, until its living state, everything is vibrating, it's a number. So आपकी वो actual natural vibration को वो चीज़ destroy करती है. And at the end, आपके heart में जो आपकी spirit blue हुई थी, जो रूह थी, वो उसको भी destroy करती है light को, and our form, it also gets corrupt. So the point is that कि इसका फायदा किसको हो रहा है, you know, of course the industry जो बना रही है, हमारे ऊपर हमारा क्या नुकसान होता है कि हम अल्लाह के वो सीधे रास्ते से दूर हो जाते हैं, you know, हमारा नफ्स वो बीच में बैरियर आ जाता है. एंड क्या कहते हैं, देयर इज अ होल काउंसिल जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, बेनिफिशियल फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक को आगे नहीं आने देते. So it's in their favor, they want to control us. So if we want to go to Allah subhanahu wa ta'ala way, so we need to get अपनी frequencies को higher की तरफ लाना होगा, beneficial frequencies की तरफ लाना होगा. So let's look around ourselves कि वो कौन से frequencies हैं. And then these were the 3 duas जो कि अगर हम सोने से पहले पढ़ लें, रात को सोने से पहले, या अगर आप कलूला के टाइम सोते हैं उससे पहले. So you know, these were like Sahaba used to, at that time our ancestors used to live, you know, every time being prepared for the death. So जिस तरह फर्द नमाज के बाद है कि आयतुल कुर्सी अगर आप पढ़ते हैं तो inshallah मौत के बाद directly, you know, into Jannat. So these 2 duas are that 1, 2, actually नमाज से सोने से पहले. Another की कहते हैं Sayyidul Astaghfar twice a day, once morning, once an evening. So these 2 duas. And then it was from Ibn Sina. It's a really good Turkish drama for kids. कि you know how Allah Ta'ala ने nature के मुताबिक बच्चों को बनाते हैं और हम किस तरह फिर उनको अपने मुताबिक करते हैं. But this quote was really relevant here. Like, if a person will not make an effort to comprehend, why does he carry the mind in his head and burden himself? You know, so अगर हमने इसको use नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर इस mind का फायदा क्या? You know, it's just like this crow जिसके ऊपर वो books का burden है. And then another part, the one who runs away from the truth becomes a slave, and while the one who strives to comprehend becomes complete. So it's our choice again, you know. Every second we are having a choice. आपने slave बनना है या आपने क्या कहते हैं अपनी peak पे जाना है, complete होना है, अपने आप को जानना है. So your choice, you choose. Another one was about the mind versus heart. कि इधर क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे आप हेड रख लें, माइंड रख लें, ब्रेन रख लें, और दूसरी तरफ आप हार्ट रख लें. सो अल्लाह ताला ने और भी बहुत से ऑर्गन्स आपके बनाए हैं, बट हेयर द पॉइंट इज कि यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द 2 ones.
सो बोथ के अपने अपने पर्पसेस हैं, बट हेयर क्या हो रहा है हमारी करंट टेक्नोलॉजी और मैनी अदर थिंग्स, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मैनी, कि हमारा जो हेड है या माइंड है एंड ब्रेन है, जो हम जो स्लोगन करते हैं बी रैशनल एंड दैट स्टफ, सो दिस कैन बी इजीली बी कैन बी हाईजेक बाय द शैतान। और जो गाइडेंस आती है, वो जो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें हदायत दें, दैट हैज टू डू विद द हार्ट थिंग। अगर आप सहाबा के टाइम उस वक्त भी कोई अफेक्ट हो रहा था, तो वो क्या कहते हैं, सहाबा के उस करेक्टर उन एक्शन से अफेक्ट हो रहे थे, सो इट हैज टू डू विद दिस। और फिर वो कहते हैं हम जिस तरह तबलीग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टली अब माइंड पे अटैक करते हैं, दैट्स नॉट द वे टू अट्रैक्ट समवन, the heart is the way। और हमें एक दूसरे के लिए भी वो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हदायत दें। So that is again we are talking about the hard part, and if not, so what are we talking about? So coming back, so the mind doesn't understand doesn't have the understanding basically of divine realities or spiritual ways, and जो head है हमारा, that is for dunya, and the nafs and shaitan is that strongly hold our brain part। एंड क्या कहते हैं, इधर आप सेकंड एक और पर्सपेक्टिव भी ला सकते हैं, वो जो ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ ला रहे हैं 2035 2045 जो उनके गोल्स हैं, और जो हमें लास्ट सेंचुरीज बल्कि उससे भी पहले सब्लिमिनल मैसेजेस के थ्रू एंड मेनी मोर वेज मटेरियलिज्म की तरफ लाया जा रहा है। सो डज इट हैज एनी लिंक? बिकॉज कंट्रारी जो आप इसके देखेंगे, सो अगर अल्लाह का वे है, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम नेचर का वे है, इस्लाम का वे है, so that is doing something with your heart, with that guidance, because heart is a home or a vessel of Allah subhanahu wa ta'ala, a door towards Allah subhanahu wa ta'ala, or those spiritual ways हमारी रूह में फूंक की गई। And so the energy, through the energy of your heart, आप उस spiritual pathway की तरफ जाओगे, और उसके लिए आपको अपना head, mind, brain ये part shut off करना पड़ेगा, deactivate करना पड़ेगा, and through mind you can't find this way। Another perspective I just wanted to share, okay, the eyes are useless when the mind is blind। So the eyes हमारी spirit रूह की और है, और जो हमारी physical जिसमें हम फंसे हुए हैं वो और हैं। So again a question, हमारी eyes are they open? Are they closed? Because we are living in a kind of a matrix, mostly things are lies. And the last point here on the slide was, is there any connection between, consciousness and that soul and then quantum, what is that one common point? जहाँ से ये सारी चीजें जाके link हो जाती हैं? Have you ever thought about that? And then another point was that, do you think these things are connected? The Carl Jung, the psychology, the consciousness, the geometry. Geometry actually, अगर आप root pinning में जाओ, it's the measurement of the earth. The mandala, जो sacred art है, जो Sanskrit के में होती है, उसमें one of the many. And the spirituality and the divinity, So are these all things are linked? Yes or no? And the Carl Jung's one other way was saying, there is no coming to consciousness without pain. So again, are we failing in EI? Because it is about consciousness, and consciousness, being aware, ittaqullah, is not that easy. It's superficial, जो हम सती level पे लेते हैं. And then once you are awake, you shall remain awake eternally. So what are we waiting? When are we gonna awake? And again, these are again used in many multi fields. Whether you pick up the New York's planning, or DC Washington, Metatron Cube, the seed of life, Vesica Pisces, tree of life, flower of life. What's going around us? Why don't we understand these languages? Again, are these connected or not? Just food for thought. So chapter 1 was about circulation, chapter 2 was about healing, and chapter 3 is about the cycle of water and its link with the cycle of life. Here, first would be about the NASA, कि NASA ने moon और Mars पे missions भेजे, उन्हें क्या issues आ रहे हैं, and then there would be crystals, जो water beaker के ऊपर words लिखे गए, उनके crystals कैसे आए, जो melodies थी उनके crystals कैसे बने, जो prayers की गई water lakes पे, उनके crystals में क्या change आई, and the way cosmos से जो water start होता है और आखिर में sea में जाता है और फिर उधर उसकी new life cycle start होता है. So what's going on? और at the end the Nile river, जब उस पे डैम बना तो क्या हुआ, और जब कनाडा में बना तब क्या हुआ. Then another, so let's start with the NASA.
So first, Dr. Louis Frank again, इनका ये आप article पढ़ सकते हैं. It's really, अच्छी खासी इसमें explanation है. And he talks about, the cosmo वाला, कि cosmos से space से आपका water आता है, comets की form में आता है, जो 12 per minute in a way, उनके way 100 tons होते हैं. अर्थ में एटमॉस्फेयर में फिर वो फॉल करता है, कॉमेट्स जो कि आइस में टर्न हो जाते हैं, and then into the atmosphere to clouds and then rain, और इस तरह पूरा cycle चलता है. But then the writer talks about कि let's take an example. What do you think about it? क्या कभी आप रात को lie on your back and did you look at the stars at the sky and did you get nostalgic? What is nostalgia? अगर आपने basically इसको understand करना, it's like in Greek its literal meaning is the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than a memory alone, a feeling of a place where we ache to go again. So, do you feel nostalgic? First ये question होगा, कभी आपने ये try किया है कि maybe there are memories of long ago when you gaze at sky or heaven and your soul goes back to million billion years. Do you feel that? Because हम आलम अरवा में थे, हमारे पास ये तो इस्लाम का perspective है. So do you get feeling that you yourself are somehow floating up in the cosmos just like a planet? So why are we so eternally, universally enchanted by the heavens? तो अब वापस current times पे लेके आता है writer, वो कहता है कि Russian astronaut and then American Neil Armstrong, and so how they went for the first time 1961 and I guess 1969. And then he talks कि NASA को कुछ issues है. So what was the issue? सबसे पहले जब space travel पे आपको rocket भेजना होता है, तो सबसे पहला issue तो ये था astronauts के लिए, due to lack of gravity उनके muscle and bones start weakening. और number 2, mental stress start हो जाता है due to isolation. Number 2, Van Allen belt, जो radiation, cosmic radiation है, not just जो 2 belts हैं around Earth, but also क्या कहते हैं universe की भी जो अपनी radiation है. तो फिर नासा ने क्या सोल्यूशन उसका ढूंढा कि देयर शुड बी थिक वॉल्स रॉकेट के अंदर, और वो फिल होनी चाहिए वाटर के साथ. और क्या कहते हैं, वाटर का एडवांटेज ये है कि कंजप्शन में भी कंज्यूम हो सकता है, फूड में यूज हो सकता है, एंड प्रोटेक्शन में हो जाएगा. बट नंबर 3, एक और प्रॉब्लम भी नासा को ये आई थी कि सोलर फ्लेयर्स. तो व्हाट आर बेसिकली सोलर फ्लेयर्स? इज एन इंटेंस लोकलाइज्ड eruption of electromagnetic radiation in the sun's atmosphere. तो सोलर फ्लेयर्स एंड द रेडिएशंस से बचने के लिए भी क्या कहते हैं, वंस के इस रेडिएशन में से निकल जाएं और आगे भी जितनी आ रही हैं, सो उस डेंजर में से पास करने के लिए दे नीड वाटर कॉलम्स. देन अनदर इशू, वाटर कॉलम ऐड करने के बाद आपके रॉकेट का साइज वे इंक्रीज कर जाएगा, विच इज अगेन एन इशू. एवरेज पर्सन यूजेस अ वाटर 180 लीटर, बट क्या कहते हैं फॉर अ स्पेस वेसल उसको 3 लीटर पे लाना एटलीस्ट लाना पड़ता है. बट अगर लॉन्ग जर्नी है स्पेस वेसल की, सो अगेन स्मॉल अमाउंट द अमाउंट विल एड अप, मैक्सिमम हो जाएगी. सो अगेन द रिसाइकलिंग पार्ट इज इम्पोर्टेंट. देन राइटर टॉक अबाउट कि इन May 2001 they went NASA Odyssey went to Mars, and क्या कहते हैं, they discovered large volumes of water in form of ice just beneath the surface of Mars. So the point is कि Mars में in past of Mars water exist करता था, and if frozen water can be used, so there is a possibility कि Mars को Earth की तरह बनाया जा सकता है. Then there was another example that writer provides कि back in Canada in Devon Island in 1996, जाने से पहले यानी in 2001, they conducted an experiment. Why they choose this island? Because it has the same lowest temperature and lower temperature, and it was also a barren land, just like जिस तरह Mars के आपको मिलेगी. So what they were trying to stimulate life. Mars में कैसी होगी? They were trying to conduct experiments here in the Devon Island, Canada. Biological scenarios उन्होंने run किए for living conditions, telecommunication, feasibility of space colonization. But at the end, this part of end होता, the writer says, okay, how long this planet is gonna be inhabitable? Because planet deteriorate हो रहा है, global warming हो रही है, which is
अगर आप currently stars में देखें, so it is a lie. So what's your say on that? But according to writers, starvation हो रही है, pollution हो रही है, water shortage हो रही है, so क्या हमारा end करीब है? So here he breaks off NASA वाला point and then he talks about, let's talk about water crystals. He took a water beaker और उसके ऊपर उसने words attach किए और फिर उनके crystals बने, पर उससे पहले वो आपको 2 minutes का वाटर क्रिस्टल की लाइफ दिखाता है कि इट्स 120 सेकेंड्स 2 मिनट्स जो वो कहते हैं स्मॉल वाटर ग्रेन्यूल फॉर्म होता है on tip of that frozen water, and this is how it turns into small crystal and hexagon and different shapes, and it's a brief moment, it forms and it disappears and just melts away. Now he talks about different EI words के साथ आप इसको relate कर सकते हैं कि जब आप happiness feel करते हैं, so this crystal forms. It's a symmetrical diamond cut shape and it's a balance. So balance and harmony, is it the key? With different perspectives you can say it. But अगर आप इसके opposite जाते हैं, if you are unhappy, so it's like faint, weak, lower vibrations, out of balance. Even it's a partial form, you know, like it's not stable. So does it show kind of our life? Then number 2, he talks about hang in there, kind of motivation, you know. You talks to someone, so it looks like, you know, again a really geometrical shape but a tight shrunk crystal, you know what it's telling about. Then number 2, just the way you are, you know, you are letting other be themselves in your presence, you know, that natural chemistry. So again, it's a unique shape, not exactly a geometrical hexagon but elongated one, stretching out, like let an individual expand. तो हम EI में कितने लोगों को अपने इर्द गिर्द ऐसे होने देते हैं और अपने अपने ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं. So another way of seeing it that. Another way, when you say, you know, you are beautiful, so you know that naturally praising, and versus when you आप जब किसी को pressurize करते हो, you know, try to be beautiful, try to be thin, stuff like that. So it's like slightly deformed crystal. Then he talks when there is a lightness and hateness. So what's the difference between lightness? There is again a whole geometrical, you know, well harmony and symmetrical, that natural shape. Or जब hate में आप देख रहे हो, there is a hollow. It seems like, you know, as you are suffocating. Are you suffocating yourself or others? Then the crystal of power. What's going on in power? It's unique, but it's kind of jumbled. Like not every problem can be solved by the power, so not a whole crystal. And helplessness state. So when we are helpless state, to how we are feeling, like have you ever thought about that water crystal inside you or around you? Again, hollow, like आपने इसकी power इससे छीन ली है. Then the innocent sense crystal, doing things with innocence, or you know, giving your whole 100%. So perhaps give you the greatest power to accomplish something. And the ham, this plant ham, it looks like that. So it has great benefits. Chapter 5 में भी ये आगे आएगा, and how, you know, George Washington, and in that time it was being used a lot. Current times में इसको ban क्यों कर दिया गया? What's the science? So basically here it's just, you know, food, clothing, it has a really good vibrations. And then at the end, the peace crystal, how it again bringing out the harmony, and versus the war. Hollow image, you know, even it's not a crystal, it's like seem like a suffocate nightmare, terrible. And the water crystal, that was the 9/11 हुआ था, so it seems something like that. And then the thank you and the you idiot का क्रिस्टल, यू इडियट में तो कोई क्रिस्टल नहीं है, बट जब थैंक यू इडियट को आप क्या कहते हैं ज्वाइन करते हो, दोनों वर्ड्स बीकर के ऊपर लिखे गए, तो इट ट्राई टू form a crystal. So again, thin formally crystal, and power of thank you, like it's showing the power of thank you is much greater and stronger than you idiot. And आप इस पे वो पर्सपेक्टिव भी ला सकते हो इस्लाम का, you know, जब हम नाम बिगाड़ते हैं तो हम कौन सा क्रिस्टल फॉर्मेट कर रहे होते हैं, हमें क्यों मना किया गया है कि, you know, नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए. So is it something with doing this? इस तरह minute level पे जाके affect होता है. And then again, thank you in different languages, Malaysian, Portuguese. Coexistence, the two crystals, like it's like two are working together and a strong one. And the competition crystal, if it's a healthy one, wholesome one, then the crystal formation will be there. So which are we are competing in? What kind of a competition? Again, a question. These are expensive one. Peace of mind. Do we have a peace of mind? And how do you define the peace of mind? So what we need more than everything is peace of mind. That's writer's interpretation. वो suggest करता है कि आप इस crystal को अपनी pocket में रखें, carry around
around as a reminder. That's what we all need. And then the marital love, it's a dynamic one. One cares about other needs, but it's a two-way road. It's not one-way road. One ko sacrificial lamb banna hai. So again, expensive crystal, these two, peace of mind and marital love one. And here are two crystals, not one. And this one, the goods and capitals and the oil, the either it's both related to modern economy move, but again it's you can't say it good or bad, but mostly the writer point was कि अगर आप इसको अच्छी साइड पे भी यूज कर सकते हो बुरे भी, बट राइट करंट टाइम्स हम इसको बैड साइड पे यूज करें. सो अगेन नो क्रिस्टल इज फॉर्म एंड बोथ साइड्स. और फिर आप इस्लाम में वो इस्लाम को भी पॉइंट ला सकते हो, यू नो, सो दैट बैलेंस, वो म्याना रवि. और अगर वो चीज नहीं होगी तो chaos होगा, लॉस होगा. Okay, so this one was about melodies. The last time we हमने किया था Alan Rubik का कि he has keys to my heart 1 2 3 4 5 6 and healing music, so crystal formation. This was again different ones in sub melodies if you are interested. So this is the list, you can go through that. And this was about the power of prayer. The power of prayer can do what? So when we talk about power of prayer, so this was one experiment जिसमें क्या कहते हैं जापान में राइटर ने 500 people जो all over जापान में रह रहे थे उनसे कहा था कि you know they send their prayer of love for water, and this was a normal tap water जिसमें chlorine add होता है. Due to chlorine आपके crystals नहीं बनते, and it due to that power of prayer that crystal form. So you can say कि feeling of love have an instantaneously effect, and it doesn't matter the distance कि आप कितनी दूर से pray कर रहे हो और आपका source जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो वो कितना दूर है. So that point. Again, Sanskrit prayer. This is the lake of Lucerne in Switzerland. So either be before prayer iska crystal, no crystal, and after prayer geometrical, hexagonal, and you know balance, a pattern, you know, उस पर writer की interpretation है कि you know it reminds him of mandala, that divine, that divinity. And the prayer जो उस पे कही गई थी, that was Swiss Lutheran prayer. Then this was Lake Zurich, Switzerland. This पे क्या कहते हैं again prayer से पहले the crystal, no crystal, but after the prayer there is a crystal. And this was the water from the Bahamas, जो इसको टेबल के ऊपर you know कप में लेके हाथ के दरमियान prayer की गई थी. And again before no crystal, and after again a crystal. Oklahoma Uki Lake, there is before no crystal, there was a process, you know, it's not never about A to Z. Ab jam karte is a process to the formation during the process and after prayer. So this was the last one topic, just chapter mein tha, that was about water adventures, the way water starts. So he talks about what have you ever thought about it कि you know water किस तरह cosmos से start होता है, ocean में उसकी life cycle end होता है. For example, have you ever think for a moment about earth as water, जिस तरह इंसान experience करता है, तो water कैसे experience करता है, that cosmos could turn into clumps of ice, atmosphere, mountains, forest, tree, moisture, dew droplets, उसका whole cycle. So for example जब rain होती है 1/3 जो water है वो आपका ground में seep कर जाता है, absorb by plants, evaporate कर जाता है बकिया क्या कहते हैं in atmosphere. और then he talks about evergreen forest. The writer talks about कि you know जब उधर बारिश होती है downpour होता है तो 10 tons of water when फौरन बारिश के बाद you know evaporate कर जाता है in 2.5 acres. उसके बाद वाटर को क्या होता है, 2 ways होते हैं. एक तो या तो वाटर यू नो एयर में evaporate कर जाता है as a mist, drift trees के दरमियान से, and rise even higher from clouds. या ऑप्शन बी होती है कि यू नो टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट उस वाटर का, और वो क्या कहते हैं as a thin layer of ice, plants, ground, grass के ऊपर आपको नजर आता है. उसके बाद जब रेनफॉल होती है पानी कहाँ जाता है, some you know roots में absorb हो जाता है यानी seep into ground हो जाता है, but ground के नीचे भी कुछ हो रहा होता है. ground के नीचे क्या होता है, there are secret tunnels, you know, spaces of air जो every direction होती हैं. और वो कैसे बनी होती हैं, वो जो creation अल्लाह ताला की छोटी छोटी मखलूक़ात हैं वो soil को soften कर देती हैं. वो spaces कुछ उस तरह से बनती हैं, कुछ वो जो spaces होती हैं rocks and sand के दरमियान
वो फॉर एग्जांपल ओपनिंग जो मेल्टेड आइस की वजह से रह जाती है उससे भी स्पेस बनती है, जो रूटेड रूट्स हैं, जो डिहाइड्रेटेड सॉइल है, और जो क्रैक स्टोन्स हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं? फॉर एग्जांपल बीटल्स, बग, रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स, सेंटिपेड्स, माइट्स, or microorganisms and molds. Then water penetrates, इस तरह soil layer से water move through the layers of sand, clay to the bedrock, and depending on the hardness of the ground, water moves as little kahin kahin 30 centimeter per year, just 30 centimeter. So what at then writer's point is, just like a personality, just like human की personality होती है जो उसे उसकी जर्नी जिस तरह की एक इंसान की गुजरी है उसकी पर्सनालिटी बनाती है, इसी तरह वाटर भी अपना क्या कहते हैं इस थ्रू होल जर्नी क्या करते हैं एक्सपीरियंस कर रहा है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो वाटर की पर्सनालिटी बना रहा है। देन ही टॉक्स अबाउट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। जो वाटर कोल के पास के ऊपर से गुजरता है तो उसका इंटरेक्शन होता है कैल्शियम के एलिमेंट के साथ या मैग्नीशियम के साथ पीरियोडिक टेबल में से, व्हिच मेक्स दैट वाटर हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर कब बनता है? जब वाटर का इंट्रैक्शन ग्रेनाइट के साथ होता है। सो विच लेफ्ट अनचेंज मिनरल्स, मोस्टली जो अनचेंज बाय दोज मिनरल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। सो व्हाट वाटर इज डूइंग? इट्स लर्निंग. It's learning from the ground, it's experiencing, it's enhancing its knowledge. फिर वाटर की कहते हैं डार्क टू लाइट जाता है, वाटर राइज करता है। फॉर एग्जांपल आप उसे स्प्रिंग वाटर में की शक्ल में देखते हैं। वाटर पेनिट्रेट भी करता है सॉइल्स में, और फिर स्प्रिंग वाटर की तरह वाटर स्मॉल स्ट्रीम्स में चलता है और एट द एंड रिवर में जाता है। एंड जब रिवर बनता है, सो आहिस्ता आहिस्ता रिवर बिल्ड्स द मोमेंटम, ईट्स अवे द लेयर्स ऑफ सॉइल जो ग्राउंड है, एंड slowly widens, deepens. But the interesting thing that comes here is canyon. जो river strong enough to carve away at mountains and create canyons. So basically what are canyons? Rivers have a natural tendency to cut through the underlying surfaces, eventually wearing away the rock layers as sediments are removed downstream. So yeah, just for an example, this is a picture. Then when these carvings are done in the rocks and so this after canyons क्या कहते हैं, सिर्फ वाटर की पावर की वजह से नहीं है, वाटर के साथ ग्रेवल्स भी होते हैं, स्टोन भी होते हैं। Then the writer talks about the small particles जो carried away वाटर के साथ जो कैरी हो रहे होते हैं, वो कहते हैं अपनी सराउंडिंग लेयर में वो अपने उस मिक्सचर में कहते हैं लार्जर रॉक्स भी होती हैं, स्टोन्स भी होते हैं, एंड क्या कहते हैं सिमिलरली द रिवर गोज डाउन। कभी कहीं आप रिवर डार्क ब्राउन देखते हैं बिकॉज उस तरह का अर्थ मटेरियल उसके साथ है, कहीं आप बिल्कुल क्लियर रिवर देखते हैं, कहीं इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इन नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान अगर आप जाएं, सो देयर इज अ रोरिंग डाउनवर्ड स्मैशिंग काइंड ऑफ रिवर एंड फिर वो कहता है इसके साथ साथ वाटर एक्सपीरियंस नॉलेज एनहांस के साथ विटनेस भी कर रहा होता है। For example, the migrating upstream, the marine life, जो उसमें से पानी बाहर पी रहे हैं, अर्थ वाले एनिमल्स, और जो बैंक्स पे आके अपनी क्वेंच थर्स्ट कर रहे हैं। और अगर ट्री इतने हैवी ट्रीज गिरते हैं ब्रॉट डाउन बाय द स्टॉर्म, माइट आल्सो अल्टर इट्स फ्लो, वो भी रिवर का फ्लो चेंज कर सकते हैं। सो इवेंचुअली रिवर कम्स हैज अ जेंटल फ्लो, or river just like enormous snake crawling body cross a plain, so never satisfied with current course, and river continue to change. जिस तरह for example अब लाहौर की example ले सकते हैं, दरियाई रावी there was a time जब बादशाह मस्जिद के बिल्कुल साथ था, and now it totally has changed its course. So one point widening, letting sediment accumulate into a sand bank and then narrowing to going its way past stone. Now here the interesting part is that to be known is the sediments. Basically sediments are the solid materials and जो एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिस प्रोसेस को एरोजन भी कहते हैं, and डिस्पोज न्यू लोकेशन। उसके अंदर रॉक्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्लांट एनिमल्स के रिमेन्स भी हो सकते हैं, smaller particular like grain से लेके larger particular boulder तक. So that is basically sedimentary. So then he talks about river twist and turn over time, and most river plots their courses slowly, कुछ जल्दी quickly shift होते हैं, कुछ नहीं होते। Then he gives an example of a Mississippi river जो shift होता है per year 20 meter per year की ये variation आती है। Then he talks about
कि रिवर के साथ सैंड सॉइल ये सब चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं और आपके क्या कहते हैं रिवर के साइड पे नेचुरल बैंक बनने लग जाते हैं जहाँ फ्लड्स आते हैं वॉश अवे कर जाते हैं बैंक्स को लेकिन क्या कहते हैं पुश सेडिमेंट्स टू फ्लैट लैंड्स अगेन सेडिमेंट्स हैव दोज रॉक मिनरल्स प्लांट एनिमल्स रिमेन्स एंड स्मॉलर लार्जर पार्टिकल्स एंड फिर फ्लड प्लेन्स जो आपके फर्टाइल लैंड्स होते हैं गिविंग बर्थ टू द सिविलाइजेशंस जो आपका डेल्टा एरिया आ गया आएगा सो फॉर एग्जांपल अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें सो उसकी मेजरल हिस्ट्री इट्स अराउंड द नाइल बिकॉज उसके इर्द गिर्द क्या होता है दैट क्या कहते हैं नरिश्ड लैंड ड्यू टू जो फ्लड्स आता है और सो इन वन वे द फ्लड इज अ डिजास्टर वे बट अनदर वे नेचर आपको वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है आपके फूड के लिए सो उन फ्लड्स की वजह से आपका लैंड फर्टाइल हो रहा है देन ही टॉक्स अबाउट अगेन कि वाटर आपको ऑब्जर्व करता है चाहे आप वॉक कर रहे हो चाहे आप साइकिल कर रहे हो ब्रिज के ऊपर एंड इट्स जस्ट वॉचिंग यू सो नाउ इट एंटर्स फाइनली इट एंटर्स इनटू द twilight years and more gently towards it enters to the sea and flowing of water comes to land. This is another interesting part. The delta basically Greek letter से निकला है because इसकी Greek letter की shape होती है की तरह shape होती है basically it is the mouth of the river that flows around the land and goes to the ocean like it's a bridge between for example अगर ये आपका river है so और ये आपकी lake है so जो beach वाला part है so that is a delta so उसमें वो example देता है कि Amazon river delta Mississippi river and many more so these delta areas are really good for agriculture because actually उधर हो क्या रहा है sediment carried away by water dropped into the river and formation of आपका delta form करता है and great deltas उसके बाद क्या कहते हैं आपका रिवर ओशन में एंटर हो जाता है और स्मॉल सैंड बैंक्स ग्रू इनटू द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ क्रिएटिंग और आपकी कोस्ट लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं एंड फर्टाइल डेल्टास फॉर्म एंड ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर रीजन इन वर्ल्ड एंड फाइनली वाटर offers humankind before उसका cycle end हो रहा है into an ocean वो आपको एक fertile land देते हुए जा रहा है so at the end the point is it's not end of water अब उसकी ocean life with marine life start होने लगी है new cycle nature is all about the cycle nature is all about process of eternal rebirth water आपको wisdom दे रहा है experience दे रहा है आपको साइकिल दिखा रहा है नेचर का कि व्हाट नेचर इज एंड वाटर इज एक्चुअली आपको अपनी सारी एडवेंचरस लाइफ दिखा रहा है कॉस्मोस से लेके ओशन तक और आगे एंड इट्स कैरिंग अ लाइफ so it's a link between together it's in short you can say it's a perfect balance then he talks about as water makes journey through life and becomes witness to all of life on earth and becoming itself a flow of life so what we can learn from this then here in Let Water Flow he gives two examples एक Canada में और एक Egypt में here what is कि water has a history human history with the bank of rivers this is always linked and he takes an example of Nile River Tigris Euphrates Indus I guess ये Skardu की है and the Yellow River and but when a traveler जब भी कहीं को travel करता है so what's the first thing that he or she is looking for that's the water so अगर आप whole history लो horse carriages से लेके automobile तक and water again river is water always observing you because it has a memory whether you are walking talking looking at the flow of water talking about your hopes and dreams so here's the first example we humankind we just love this technology we are so proud of it and what happened हमने उस natural flow को change करने की कोशिश की for example इधर वो example लेता है dams की for example in 1971 Nile River पे construction start हुई Aswan High Dam की it was 3.6 kilometer across and 110 meter high and the point was जो आप dams बनाते हो तो उसमें आपको few points consider करने पड़ते for example if there is ancient something you have to relocate it the most important is people have to relocate it number 2 yes flood आता है लेकिन आप इस चीज को इजिप्ट में आपने डैम के साथ कवर कर लिया और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपने इजिप्शियन पॉपुलेशन के लिए कर ली but the third problem was कि Nile River was no longer capable of nourishing once that delta fertile land
जो उधर फार्म लैंड था, बिकॉज नाउ यू आर कंट्रोलिंग द वाटर थ्रू डैम्स आर्टिफिशियली। नंबर 4 प्रॉब्लम क्या आई, आपको इरिगेशन सिस्टम लाना पड़ा, जिसकी वजह से आपके क्रॉप्स में सॉल्ट की डेंसिटी इंक्रीज हुई, जिसने आपकी सॉइल की क्वालिटी को खराब किया। नंबर 5 इशू, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करना पड़े। इससे पहले आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली नेचर से मिल रही थी, यू डोंट हैव टू डू दैट। नंबर 6 आपके वो डेल्टा एरिया puddles, pools से form होने लग गए, you know, which is not good for crops. Number 7, it became a ground for harmful insects, which was again harmful for residents that were living around. Number 9, आपका delta area जो था वो sink होने लग गया. और number 10, scientists started noticing कि you know आपकी जो fish population है डैम के अंदर, उसके अंदर जो mercury की amount है वो बहुत हद तक increase हो गई है, और उसकी वजह क्या, जो आपकी mountain valleys है उससे जो वाटर डैम में ड्रेन हो रहा था। नंबर 11 क्या इशू आया, आपकी प्लांट लाइफ बरीड होगी, दैट नेचुरल प्लांट लाइफ वाज बरीड, जिसकी वजह से अब खाली इधर सॉइल बच गया, और उस सॉइल में वो was perfect breeding ground for the bacteria. And the bacteria से क्या हुआ, bacteria started absorbing that mercury जो fish के अंदर भी जा रहा था, और जब bacteria और mercury, so the chemical reaction took place, that bacteria turned into highly toxic methyl mercury. Here you can see, for example, this is an example of coal plants, but just imagine कि आपके उस soil में क्या कहते हैं methyl mercury है, and that soil के साथ आपका Nile river है, and that going in the water and वो आपके fish में जा रहा है, so that's how the fish mercury harmful fish, it's like, and there is a whole category of low mercury fish versus high mercury fish. So the last 13 point was आपका ecosystem के destroy हो रहा है, and आपके fish bodies alarm rate पे mercury पे amount में जा रही हैं, not good for marine life as well as for human जो उधर उसको खाते हैं. So problems किस किस के लिए create हुई, human जो उधर रह रहे थे उसके इर्द, the marine life जो उसके अंदर थी, the ecosystem dam ने eliminate कर दिया, so the nature जिसने hundreds and thousands years लिए to form, हमने उसको within couple of years or months हमने उसको खराब कर दिया. Just a side note on this, it's just like, you know, EI trust, it takes years to build on and it just finishes in few seconds. Number 2, he gives the example of Canada. Canada में भी same thing हुई, the high amount of mercury was found in this indigenous people there, Cree Indians, who were living around the James Bay and Peace River. And this is just one example. It was also found in other parts of Canada too. And again, इस lake में fishing करते थे वो लोग, और क्या कहते हैं इस reservoir को again dam के लिए use किया गया, and electricity. So this is in short, through these examples he wants to give you an view. This is what happens when we block the natural flow of the water. And then he talks about okay, let's take a break, you know, put on your brakes, and water, where water flows, pure water always flows, and that is its natural cycle. But how we human can fit in this delicate cycle, because animals are following that, but we are not following that, we are the only ones. So we need to let it flow, we need to respect it, and water shower, it's good without being biased, whether it's plant, any living beings, you know. And so let's return to that cycle and let's love the nature, because if you do it by the bottom of your heart, so earth knows how to, you pray to it and it knows how to give it back to you. So here's the book finishes. Now the just relevant points. Last time अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई थी, I am just trying to, you know, उसको summarize करने की कोशिश कर रही हूँ कि I just was exploring कि जब आप water crystal को देखते हो, for example, you know, this is a water crystal of saying when you say you are beautiful, so there are whole geometrical shapes इसके अंदर. You see a hexagon, an inner hexagon, then triangle, and you know, Star of David. So what is going on in here? Now if you take the sacred geometry, this is Metatron cube, the and it has something to do with 108 and the cube thing, but let's stay to the straight point. Again, the same geometry you can see here too. First crystals, number 2 आपकी sacred geometry,
Number 3, when you observe the Tesla generator machines and many other machines, you know. So number 3 things. Number 4, जब आप architecture में आते हो और जब आप town plannings, for example, New York town planning, DC Washington plannings देखते हो. So again, the same. Here it's just the difference कि, you know, either hexagon की बजाय pentagon है, but again 5 pointed stars. And अगर आप इन दोनों को भी देखो, this pointed part और जो crystal का भी ये part है, so again these are similar. What's going on? And there is this Russian building, Starford, and it उसका क्या कहते हैं equilateral oscillator image. So again by music, I'll attach these क्या कहते हैं the links, but the point here is, you know, what's going on. कुछ कहते हैं कि ये power stations थे, कुछ कहते हैं strategically during war इनके पास Starford होता था, उनको एक edge होता था. But what's the coincidence, you know, कि इन 4 different चीजों के अंदर this same geometrical shapes are getting repeated. And so the book के अंदर से जो part है, that is water crystal, and this music melodies one. जब आप cymatic frequency को देखते हो, और इसके अंदर basically cymatic frequency क्या है कि जब sound मीट करती है सब्सटेंस के साथ, सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका सॉलिड फेज, लिक्विड फेज या गैस फेज, और इसमें आपकी सॉल्फेगियो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, ऑसिलोस्कोप म्यूजिक भी आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हेयर आपकी अर्थ अगेन, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह आपके ब्रेन आपके ईच एंड एवरी पार्ट की है. एंड देन लैंग्वेज अगेन विच इज अगेन साउंड. So here आप again देखो, in this frequency again there is a geometrical shapes originating from one point, and you know at particular amount of, you know, a numerical value, for example 741 hertz here and here 432 hertz. So again same geometry is repeating again and again. This is a sacred geometry, and this is traditional art mandalas. So what is going on around us? And then another point was just to this says कि, you know, like Allah subhanahu wa ta'ala के नाम के या अव्वलु या आखिर, उस तरह the alpha omega also represent this. So these are the Greek letters, but has it anything to do with, you know, जो अरबी का letter है, जिस तरह for example लिल्ला है की formation है. What is going around here? Again हमारे alphabets कहाँ से बने हैं, उसके लिए आप वो book पढ़ सकते हैं. A is for ox, short history of alphabets. And this was an interesting point here. Just a second. This was in the Captain Ottoman times sea captain, and he it's his flag. You can see it easily on Wikipedia. That's the link. First, there are 4 parts of his flag. First is the Quran ki surah Saf ki ayat Nasrun min Allah wa fathun qareebun wa bashiril mu'minina ya Muhammad. Victory ya Muhammad ने बाद में add किया because this was addressing Prophet sallallahu alaihi wasallam, and victory from Allah subhanahu wa ta'ala, an eminent conquest, and give good tidings to the believers. Okay, number 2, there were crescent moon shapes, जिसमें 4 खलफाए राशिदीन के नाम लिखे गए थे. What's with the crescent shape, you know, versus the cross? इसकी history क्या है? Number 3, the blade sword, जो कि जुल्फिकार की representation है. Number 4, this was the one जिस पे मैं चौंकी थी कि, you know, why David Star, what was it doing at the Ottoman time, captain उस वक्त के पाशास के flag पे. So हमारे नजदीक it's a Jewish star David, but अगर आप medieval times की history में जाते हो, it's a popular Islamic symbol. Seal of Solomon में भी use हुआ है. उस time के Beyliks जो जंदारी जो उधर के पाशास होते थे, वो भी अपने flag में use करते थे. And it was even used in जो Ottomans की mosques थी, उनकी decorations में, उनके coins में, personal flags of pashas. And there was just another history कि Hayreddin Barbarossa. Barbarossa is basically Italian word, जिसका मतलब है red beard, and whole history of these 2 brothers, Khizr Reis and Baruch Reis. So this is just another link if you want to explore. And this is from the Wikipedia page, you can check. Okay. And the 3 जो उन्होंने personalities इसमें as a Muslim history, Islamic history उन्होंने discuss की हुई है. That is the Piri Reis, the famous map maker, Ottoman times के, and the Ottoman Navy. Khizr Reis जिसको Hayreddin Barbarossa भी कहते हैं. And another जो उसमें चौंका देने वाला point है, that was at that time, for example, there was Unita.
So was it a coincidence? Right now, current times my United Nations and there is Unita. And another personality that really few people know about, the Jack Sparrow. जिसने 1610 में इस्लाम कबूल किया था, and his name was Yusuf Reis. So in conclusion, water crystal and melodies आपने book से उठाई, और उसके अलावा sacred geometry के लिए, traditional art के लिए, everything originating from one point. What's the science behind it? Is it just a coincidence? And the symbols alpha omega, ये हमारे alphabets A B C कैसे निकले, architecture, urban town planning, and the machines everywhere. Why are we seeing the geometrical particular shapes? So is it all is numbers and all is consciousness? What do you think? Just a point to ponder. And another way thinking for perspective is nothing in nature is by chance. Something appears to be chance only because of our lack of knowledge. So maybe that knowledge is lost, या हमें उस knowledge की समझ नहीं है, हमें वो पढ़ाया नहीं गया या हमसे छुपाया गया. At the end, if you want to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration. And if you only knew the magnificence of 369, then you would have a key to the universe. This was another perspective on moon. कहते हैं कि इस बुक के अलावा कि was it a fraud system, ये सारा लाया था, because the more you read then you get to know. This is a documentary जिस पे उसने सारा explain किया हुआ. There is a book जो अगली slide पे आएगी, उसके chapter 9 पे empirical evidence again with pictures उसने explain किया है. And this again in 3 minutes here he's also explaining कि how these are fake photos. And in this video he's talking about the government subliminal messages, and in this he's talking about the media control all over the world, and how in one Allen belt may there is 100 rem per hour radiation, and one human ke liye healthy one is just 1 rem value. So how one can pass through that one Allen belt? So it's just not just impossible. And here NASA admits the fraud, and here is the evidence of that guard जो उस वक्त जब ये fraud हो रहा था उधर था. This is the book. इसका chapter 9 में आपको evidence मिल जाएगा, and this is a good one because वो उसके साथ साथ उसमें links होते हैं. आप जाके videos देखते हो तो आपको book ज़्यादा अच्छी समझ आती है. It's not just theory, it's theory plus videos. These are other books just to explore if you want to explore. And these are movies, but the more if the eyes अगर आपकी eyes open हो जाएं, then you start connecting all the dots. These are just not the movies, these are documentaries. These people, big brothers, everyone, they they do things in plain sight, like hidden in plain sights. So they live, the Truman Show, the Prometheus. This is interesting one. How क्या कहते हैं एक another planet पे, moon पे क्या कहते हैं एक virus रखा हुआ है, और कि ताकि Earth के people उधर आए and they take that back to the earth. So is it that कि हम उस टाइम पे जा रहे हैं जो 2035 2045 ट्रांसह्यूमन का टारगेट है कि वायरस के थ्रू ह्यूमंस को खत्म करना है? This is Fringe season again talking about that virus thing. And the Matrix, these are pretty famous. These are not movies, these are documentaries. This is a YouTube page. इस पे आपके वो सारी with ओपन करके वो सॉन्ग्स की वीडियोस हो, whatever it is, मैजनिक पीपल हो जो उधर के फॉलोअर्स हैं, उसको खोल खोल के बताया हुआ है कि क्या क्या चीज कहाँ के सिंबल्स हैं, और इट्स हिडन इन प्लेन साइट. इट्स जस्ट कि हमें उस लैंग्वेज का नहीं पता, सो दैट्स व्हाई वो हमें फूल बनाने में कामयाब हो रहे हैं. सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, टेक केयर. जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट चैप्टर में हम एक चीज़ जो है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन एविडेंस के वाटर और रॉक का भी आपस में कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रॉक बेसिकली मिनरल्स हैं, और जैसे कि जो वाटर इटसेल्फ है वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, और उस फ्रिक्वेंसी का जो है वो मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मटेरियल का फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो दिस इज समथिंग जिसको एक बुक और कुछ पेपर्स अभी देयर इज लिंक, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जी ऑथर ने सिर्फ 2 बातों में छोड़ दिया कि डांस बनने की वजह से आपकी डेल्टा अर्थ को और आपकी नरिशमेंट ऑफ नेचुरल नरिशमेंट थी उसको फर्क पड़ा, और जो है आपका जो थर्मल रेडिएशन है वो इंक्रीज हुई है. थर्मल रेडिएशन सी की कैसे इंक्रीज हुई है, इस वजह से इंक्रीज हुई है, वो मरकरी ज्यादा होने की वजह से हुई है कि नहीं हुई. इसमें ऑल काइंड ऑफ रिसर्च दैट नीड टू बी लिटिल मोर नीड टू बी डिग इन.